Hi everyone. This is the eighth lecture for your chapter Chemical Control and Coordination, as well as the third lecture for your chapter Human Reproductive System. In the last class, we covered different aspects of female reproductive system. We saw the anatomy of female reproductive system, then the associated endocrinology, the gametogenesis, which is also known as oogenesis. We studied follicular genesis, and we saw all of this together in form of menstrual cycle. Okay, how the hormones affect the histology, or how the hormones affect gametogenesis. We ended the lecture there. Today we will be starting with the next phase, which is fertilization. Okay, and in fertilization we shall discuss pre-fertilization events as well as post-fertilization events. In post-fertilization events, we shall see the embryo development, implantation, pregnancy, childbirth, and lactation. So this is the agenda for today's lecture. This is how much we will cover. Starting with fertilization. So what is fertilization? It is a fusion of haploid male gamete, which is sperm, and haploid female gamete, which is ovum, to form a diploid zygote, which is known as the whole process is known as fertilization. Okay, so you have a haploid male gamete and a haploid female gamete. Then there occurs a fusion, which is known as syngamy. Okay, and this fusion leads to formation of a diploid cell, which is known as zygote. Okay, it is a diploid cell. Zygote will undergo development and form embryo and later on fetus. The idea of fertilization was known to Leeuwenhoek in 1683. So if you remember Anthony van Leeuwenhoek from our cell chapter, so this is the same Leeuwenhoek, okay, who was the first person to see moving organism in a drop of pond water. Now, where is this site of fertilization? So we now understand what fertilization means, but where does it take place? So the site of fertilization is ampulla of oviduct. This is an important point to remember. Okay. So if you remember, this is the ovary. Then you have the oviducal funnel, okay, which is also known as infundibulum. The infundibulum has finger-like projections called fimbriae. After the infundibulum, or this broader part, comes this region which is known as ampulla. And when the ampulla ends, there is a narrow tube-like structure known as isthmus, which finally opens into the uterus, right? So here the fertilization event takes place in ampulla. Clear? It is important to remember this whole process occurs inside the oviduct itself. So what are the pre-fertilization events? The first thing is the arrival of sperms. So as you can see, the sperm they enter the vagina during intercourse. So a male discharges semen into female's vagina during coitus, and this is known as insemination. Okay, this process is known as insemination. A single ejaculation of semen can contain 200 to 300 million sperms. This we have already discussed in the male reproductive system, right? So in a single ejaculation, you have 200 to 300 million sperms which are released in the female vagina. Then there is arrival of the secondary oocyte. Okay, this was from the male part. Now let us talk about the female. Okay, so there is arrival of the secondary oocyte. We saw this is known as ovulation. Fine. So from the ovaries, the secondary oocyte, it gets released. So after ovulation, the secondary oocyte is received by the fallopian tube. This here is the fallopian tube or your oviduct. Okay, one and the same. So it is received by the fallopian tube by the movement of fimbriae. We also saw how these finger-like projections, they help in movement of the secondary oocyte. So they help then this region, okay, it is lined with epithelium which has cilia. So the oviduct has ciliated epithelium. Okay, the ciliated epithelium will help in the movement of this secondary oocyte into the ampullary region. The secondary oocyte can be fertilized only within 24 hours after its release from the ovary.
Okay, the secondary oocyte, or which is also commonly known as ovum. So ovum can be fertilized only within 24 hours of its release from the ovary. Now let us talk about the movement of the sperm. So you have two gametes which are ready. Okay, the male gametes are present in the vagina. The female gamete is present in the ampulla. Now the only part is that the female gamete, which is the ovum, it cannot move, right? So it will stay there. It will be um, staying there only. It will be waiting for the sperms to arrive. Fine. So the sperm is the gamete which is able to move. So we shall see the whole journey of sperm now. So there is movement of the sperms. Now, if you remember, in the male reproductive system, I had discussed that the seminal vesicle fluid, okay, the seminal plasma, which is secreted by seminal vesicle, okay. So this also had one extra local hormone known as prostaglandin. Do you remember? So, what does this prostaglandin do? The function of prostaglandin is that it helps in contraction of smooth muscles, right? So, smooth muscle contraction can take place because of prostaglandins. What are prostaglandins? They are nothing, they are just local hormones, okay? So, they can also be termed as hormones, but they act locally, only in neighboring area, in nearby area. They are not spread throughout the body through blood. Clear? So this is the difference. So they are local hormones, and what do they do? Their function is contraction of smooth muscle. Clear? So now seminal vesicle fluid was containing prostaglandins. So when the semen, okay, it was released in the vagina, then in that semen there will be seminal plasma also, which contains prostaglandins. What does this prostaglandin do? It will cause the contraction of this cervix as well as the uterus. Okay, it will cause this contraction in such a way that these sperms are taken up inside. Okay, so it will squeeze the muscles here so that the sperms can be taken up. Okay, so this is how it is helping the sperms to be taken up in the uterus. So contractions of uterus and fallopian tube assist the sperm in movement initially. This is just an initially, okay, just after ejaculation this might happen, but later on they have to rely on their own motility. Okay, they have to be mobile and they only have to move around and reach the ovum. The sperms can swim at the rate of 1.5 to 3 millimeter per minute. Okay, so their speed is quite high. But what happens is this road, okay, the path is not very simple, as we shall see. Right? Only a few thousand sperms they can reach the opening of the fallopian tube. So here are the openings of the fallopian tube, right? So only a few thousand can reach there. Remember, we started with 200 to 300 million, but only a few thousand can reach till here. Why is it so? So, here, when the sperms are moving, there are actually certain clotting proteins also, which I had discussed in male reproductive system, that the male accessory glands, no, they secrete some clotting proteins. What do these clotting proteins do? They make sure that the semen remains attached to the vaginal wall. Okay, so sometimes these sperms they remain attached in that clot only. So they will remain here itself. They will not be able to move ahead. Clear? And we had also seen that not all of the sperms are equally motile. Only some may be very motile, and the others might not be equally motile. Clear? So that is the first reason why only some make it through till the fallopian tubes entrance. Okay. Second thing, when it has to move through the vagina, it is almost like to swim about 5 kilometers for a man who is about let us say 170 centimeter. Okay, so if you are a man of 170 centimeter height and you have to swim for 5 kilometers, that is how long this journey is for the sperms. Clear? So sometimes they get attached somewhere else. Okay, they get stuck somewhere else because the path is quite long. So this is why only a few can reach the entrance of the fallopian tubes. Also, for the reproductive health of female genital tract, there is presence of WBCs.
Okay, so in the female reproductive system, there are also some WBCs which are just present there to save it, okay, to protect it from different bacteria or different viruses or organisms. So what happens is they also consider sperms as foreign organism, which is why they start eating up the sperms. So here you can see in the microscope, these are the WBCs which are picking up the sperms. Okay, so this is also the reason why the female reproductive system, no, it eats up a lot of sperms. The WBC, they finish up the phagocytose a lot of sperms like this. Yeah. Now, yeah, few more things. The cervix, it is a very narrow opening. So a lot of sperms, they come till here, but they cannot enter the cervix. Okay. Only a few make it through the cervix. After entering the cervix also now, as you may know, there are two fallopian tubes, right? There are two oviducts. So the decision has to be made whether to go to left or to go to right. The ovum will be present in any one of these fallopian tubes only. Okay, only one ovum is produced alternatively from each ovary. So the ovum might be present in any one part only. So it is also by chance that you have to decide whether to go left or to go right. So half of the sperms which go right, let us say the ovum is not there, it is on the left side, then it is all futile, okay, useless. So a few of them, they will go through this fallopian tube and reach till the ampulla region, and only one will be able to fertilize the ovum. So this is why the sperms, okay, they are secreted or they are ejected in 200 million to 300 million numbers. One more thing I had to mention is not all of the sperms are created equally. Okay, the spermatogenesis, it can be affected by a lot of things. So if the person is a smoker or is doing drugs, is a chronic alcoholic, or works in some factory where they are working with carcinogens or different chemical compounds, okay, it can also affect the process of spermatogenesis. What can happen is, no, sometimes you have double headed sperms, so the sperm tail might be same, but there are two heads to the sperm like this. So this is not a very motile or very good sperm, right? Then some sperms will not have a proper middle piece. Now middle piece is important because it has the um, mitochondria, right? So if the mitochondria are not functioning, then the sperm is not motile. So sometimes there are structural defects in the structure of sperm, which is why it will not be able to reach. So the number is higher, okay, 200 to 300 for this reason. We had also seen that apart from being structurally good, the sperms also have to be functionally good. That is, they should be able to swim. वो जो हिंदी में बोलते हैं ना, लंबी रेस का घोड़ा होना चाहिए, बस सेम थिंग. So here also their tails, their mitochondria, they should be very functional. तो ही वो पहुंच सकेगा, वरना तो आधी रेस में ही सब ठे हो जाता है. ठीक है ना? Okay. And what was one more thing? हाँ, तो ये जो cervix वाला region है, there the female reproductive system, no, the endometrium, it is glandular, वो भी हमने बात करी थी. तो they secrete mucus. तो this area, ये जो narrow cervix है, it is full of mucus. तो वो म्यूकस में से भी स्विम कर करके यूटरस तक पहुंचने में टाइम लगता है, एंड ओनली अ फ्यू कैन रीच टिल देयर. सो यू कैन सी कि जहां से शुरुआत होती है उधर से इतनी कठिनाइयां बढ़ती जाती है. द होल पाथ इज काइंड ऑफ ट्रेचरस ओनली, एंड ओनली सम ऑफ देम कैन रीच द फाइनल गोल, राइट? So now, after the arrival of sperms, the movement of sperms, we will talk about capacitation of sperm. तो जब ये एपिडिडाइमिस में होते हैं या व्हेन दे आर इजेक्यूलेटेड, यू कैन सी दैट दे हैव सम सॉर्ट ऑफ कवरिंग. ठीक है ना, उसके ऊपर कोलेस्टेरॉल और कुछ प्रोटीन्स का ऐसे कवर जैसा बन जाता है. सो बिफोर दे कैन एक्चुअली रीच द ओवम और फर्टिलाइज द ओवम, these extra molecules should be removed. तो उसका जो हेड है, स्पर्म का हेड, इट शुड बी क्लियर्ड. ठीक है ना, तो वो एक क्लियर करने की प्रोसेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन, उसकी कैपेसिटी बढ़ाना. ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहे हैं ब्लैक कलर वाले, दे आर एक्चुअली रिसेप्टर्स. ये रिसेप्टर्स है विच विल गो एंड अटैच टू द ओवम. लेकिन ये रिसेप्टर के ऊपर बहुत सारी चीजें ऐसे चिपक जाती है, तो ये चिपकी हुई चीजों को आपको क्लीन करना है, देन ओनली इट विल बी एबल टू टच द ओवम. ठीक है, और रिकॉग्नाइज द ओवम.
रिसेप्टर उसका क्लीन होना चाहिए. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कैपेसिटेशन. और कैपेसिटेशन जो है वो सिर्फ फीमेल ट्रैक के अंदर ही हो सकता है बिकॉज ऑफ फीमेल फ्लूइड्स, उसके अलावा हो नहीं सकता. तो रिमेंबर yesterday I was telling you कि the female genital tract it has endometrium which is glandular and it secretes a lot of different fluids. तो ये fluids जो है they will be helping in this process. The sperms are made capable of fertilizing the egg by secretions of the female genital tract. These secretions remove the coating substances. ये जो भी हरा हरा coating दिख रहा है आपको, ये coating remove हो जाएगा. And the acrosome is cleaned. ठीक है, जो head है, जो acrosome है, that especially should be clean. The receptor sites on acrosome become exposed. ये जो भी है ये receptors है and now they are exposed. So this is only how the sperms become active and they can penetrate the egg. It takes about 5 to 6 hours for this capacitation process. Next, acrosomal reaction. अभी चलो we will talk about a few sperms. कुछ 100 जैसे sperms होते हैं which can actually reach the ovum. So what happens after reaching? So this is the diagram of a stepwise reaction. Okay, what will happen? So the first thing, if you remember, acrosome जो है वो सिर्फ Golgi body का एक modification है and it is filled up with different hydrolytic enzymes. Clear? So what happens now? Capacitation हो गया, receptors active है. These receptors will bind or they will recognize this ovum. वो recognize करने के बाद इधर चिपकने के बाद ये acrosome जो है वो उसमें से hydrolytic enzymes it will start releasing. Clear? So can you see after making contact these enzymes are being released. So capacitated sperms release various chemicals and enzymes. ये enzymes जो होते हैं they are hydrolytic enzymes and they are also referred to as sperm lysins. Lysis मतलब break down करना, right? So sperm lysins and so these will start what you can say boring a hole. Okay, they will start digesting the zona pellucida and try and reach the egg membrane. The hyaluronidase that acts on ground substance of follicle cells and then dissolves the corona radiata as well as zona pellucida. So if you remember, there were a few granulosa cells also present outside the zona pellucida. So these granulosa cells are also digested. Okay, they are removed from the path, removed from the way. Then this zona pellucida, which is made up of glycoprotein, which is hyaluronic acid. Okay, so to digest the hyaluronic acid, you have hyaluronidase. So this hyaluronidase will also be digested by these hydrolytic enzymes, and as you can see, it is creating a hole. Okay, so that the sperm can move towards inside. For this reaction, you require optimum pH. Okay, for this, the optimum pH is also required so that the sperm is capable of doing the process. Then you require calcium ions as well as temperature for this proper acrosomal reaction. In absence of calcium, fertilization does not take place. Hence, calcium is very, very, very important. ठीक है, calcium नहीं होगा तो fertilization होगा नहीं. So these are the important points: optimum pH, calcium, as well as temperature. Now, after reaching till this plasma membrane, ठीक है, ये plasma membrane जो है उधर egg की plasma membrane या ovum की plasma membrane, it will reach till there. उधर पहुंचने के बाद the plasma membrane of sperm head and the plasma membrane of egg will fuse. वो fusion होगा जो आपको इधर last में दिख रहा है ना? After that fusion, this sperm nucleus will be entering the egg. ठीक है, तो इस तरीके से the nucleus now enters the ovum और ये पूरी process हो गई how the sperm can enter into the ovum. Now, binding of the sperm, it causes the secondary oocyte to induce depolarization. ठीक है, अभी कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन होता है कि why does only one sperm fertilize the egg या ज्यादा sperm fertilize हो ने fertilize कर दिया या entry कर ली तो क्या हो जाएगा, right? So in reality ऐसे ही होता है कि there are a lot of sperms trying together, है ना? ये अगर egg है तो egg के आजू बाजू सभी जगह पे अलग अलग लेवल तक जो होल बनाने का काम है वो सारे स्पर्म्स कर रहे हैं, लेकिन एक ही कोई ऐसा होगा जो अंदर तक पहुंच सकेगा. क्लियर? आफ्टर दैट वन स्पर्म एंटर्स
उसके बाद ऐसी तो क्या चीज होती है कि कोई और एंटर नहीं कर सकता. So here if you can see this on the left hand side there are a lot of sperms which are trying. ठीक है. लेकिन on the right hand side when you see that only one sperm has entered, तो वो enter जैसे ही करेगा वैसे ही अंदर depolarization होगा. Now remember from your nervous system depolarization का मतलब क्या होता है कि अंदर की मेम्ब्रेन which was first negative in charge, okay, उस पे negative charge था, वो अभी अंदर से positive हो जा रही है. Clear? This is also because of calcium, तो ये calcium की वजह से ही हो रहा है. So you can see there are a lot of positive charges on the inner side. ये positive charge अंदर आ गया, इसकी वजह से the sperms will not be able to fertilize the egg now. Okay? कोई और जो है दूसरे sperms जो है जो attached होंगे भी वो भी enter नहीं कर पाएंगे because of this positive charge. ठीक है. तो इस तरीके से because of depolarization which will occur only when one sperm has entered, कोई एक sperm अंदर तक पहुंच गया, उसका न्यूक्लियस रिलीज हो गया, उसके बाद ही ये रिएक्शन होगा. Depolarization prevents polyspermy. Poly मतलब many, spermy मतलब ज्यादा sperm से fertilize होना. So this depolarization will not allow other sperms to fertilize. इसलिए सिर्फ एक ही sperm जो है that will be able to fertilize. This is known as monospermy. ठीक है. तो this depolarization ensures monospermy. लेकिन ये चार्ज की वजह से आप बहुत लंबे समय तक इसको दूर नहीं रख सकते. तो what is the second reaction that happens? Can you see these granules? हमने इससे पहले वाले डायग्राम में भी देखा था कि if this purple colored layer is the ovum cell membrane, okay, और oocyte cell membrane, तो उसके अंदर ऐसे ग्रैन्यूल जैसा दिख रहा था. These are known as cortical granule. Cortical क्यों? क्योंकि cortex का मतलब होता है पेरीफेरी, है ना, बाहर की तरफ. तो इधर ये जो पेरीफेरी है ओवम की, उसमें अंदर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ प्रेजेंट है. ठीक है. ऑल ऑफ दीज ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल का मतलब होता है छोटे दाने जैसा. So now these cortical granules, they are also nothing but vesicles filled with enzymes. तो उसके अंदर भी enzymes filled होते हैं. But they can only get activated after the sperm has entered. तो अभी आप देख लो ये sperm ने entry ली, उसका nucleus जैसे ही अंदर आ गया, after this entry, these cortical granules, they will start fusing with the plasma membrane. जैसे ही वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होना शुरू कर देंगे, तो ये रिसेप्टर दिख रहे हैं आपको. दीज आर द रिसेप्टर्स वेयर द स्पर्म वाज एबल टू बाइंड. तो ये रिसेप्टर को ही डाइजेस्ट कर देगा सो दैट नो मोर स्पर्म्स कैन बाइंड टू दिस एग सेल. ठीक है. तो ये रिसेप्टर्स को डाइजेस्ट कर देगा. कुछ और सेल्स है उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, ग्रैन्युलोसा सेल्स को. ठीक है. तो इस तरीके से इट इज ट्राइंग टू अवॉइड पॉलीस्पर्मी. तो दिस सेकेंड रिएक्शन इज नोन एज कॉर्टिकल रिएक्शन. जल्दी से क्या हो जाएगा जैसे ही स्पर्म एंटर हुआ, डीपोलराइजेशन. तो दिस इज लाइक अ क्विक स्टॉप, है ना, क्विक ब्लॉक बोलते हैं इसको. लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म रिलीफ, मतलब लंबे समय तक कोई और आए ही ना, इसके लिए these cortical granules they will be released, and these cortical granules they eat away all these receptors. रिसेप्टर ही नहीं बचेगा तो कैसे ही स्पर्म आके चिपकेगा, है ना. तो कोई और स्पर्म ना आ सके, इसीलिए these receptors and a lot of different cells and everything is digested. Okay. Now talking about the main event which is fertilization. The secondary oocyte जो ये हो गया, it receives the sperm. The centriole of the sperm divides and form two centrioles for the cell division. अभी जो egg cell है, it does not have centrioles. ठीक है. तो oocyte या ovum, it does not have centriole. उसके पास centriole होता ही नहीं है. तो without centriole it cannot divide, है ना. आपको तो ये पता होगा, we have studied in cell division that you require centrioles, और centriole का भी replication होगा. You have two centrioles at opposite poles and they will help in separation of the chromosomes. तो इधर जो egg cell है उसके पास centriole होता ही नहीं है, so that it does not divide before the sperm entry, ताकि वो sperm की entry के बिना divide ही नहीं हो सकता. ठीक है. So now what will happen, this sperm here, okay, it has this yellow colored structure that you can see जो barrel shape का है, that is centriole. तो nucleus के अलावा वो centriole भी enter होता है, and centriole के replication के बाद you have two centrioles
and these two centrioles will help in the division of the secondary oocyte. ठीक है, अभी तक ये एग जो है, ओवम जो है, इट इज इन सेकेंडरी oocyte फॉर्म. सेकेंडरी oocyte का एक और मियोटिक डिवीजन जो मियोसिस 2 है, दैट इज रिमेनिंग. याद हो तो ये मेटाफेज 2 में स्टक है. ओके, इट इज स्टक इन मेटाफेज 2. सिर्फ स्पर्म की एंट्री के बाद ही दैट मेटाफेज विल कंप्लीट इनटू एनाफेज, टेलोफेज, एंड देन फाइनली 2 cells विल बी फॉर्म्ड. ठीक है, राइट. So this fertilization is also known as karyogamy. Karyo का मतलब होता है nucleus, gamy का मतलब होता है marriage. Okay, so because there is fusion of two nuclei, it is known as karyogamy. This can also be known as amphimixis. The sperm cell, the sperm entry stimulates secondary oocyte to complete its second meiotic division. जो meiosis के second part में, meiosis 2 में भी specifically metaphase 2 में stuck था. Okay, at time of ovulation it is stuck at metaphase 2. तो metaphase 2 के बाद completion करेगा, पूरा division complete होगा, and after that division you will find that it forms this one big cell. ओके, जो एग सेल है वो बड़ा ही रहेगा, एंड इट विल रिलीज अ स्मॉल पोलर बॉडी. ये पोलर बॉडी के अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा. क्लियर? नाउ व्हाट रिमेन्स इनसाइड दिस बिग सेल इज जस्ट योर फीमेल प्रोन्यूक्लियस एंड मेल प्रोन्यूक्लियस. ठीक है, जो स्पर्म सेल है, इट नाउ बिकम्स द मेल प्रोन्यूक्लियस. प्रोन्यूक्लियस मतलब हैप्लॉइड. ठीक है, and the female pronucleus. Now both of these haploid nuclei, they will fuse. उसके chromosomes जो भी है, they will get intermixed, subfusion fusion होगा, and they get mixed. So this is known as karyogamy. Nucleus का marriage. Okay, the literal translation, karyogamy. The fertilized ovum is now called a zygote. अभी ये जो भी बड़ा सा सेल था, which we were calling it ovum, this ovum is now called zygote. जब ये nucleus का fusion हो जाएगा and you have diploid number of cells, chromosomes. Okay, diploid number of chromosomes in the cell. इसके आसपास आपको जो ये दिख रहा है, that is zona pellucida. Zona pellucida जो है, it will remain, okay, till there is I think 8 to 16 cell stage तक ये रहता है. Okay, zona pellucida. उसके बाद only it will get destroyed. And these polar bodies, by the way, they just get disintegrated. उसका कोई काम होता नहीं है तो उसको destroy कर दिया जाता है. The zygote is diploid unicellular cells that has 46 chromosomes in humans. Now ये fertilization का importance क्या है? तो the fertilization, it restores the diploid number of chromosomes. अभी जो भी eggs की बात हम कर रहे थे तो उसमें x number of half number of chromosomes होता है, right? And same in the case of male gametes या sperm, उसमें भी half number होता है chromosomes के. So only by their fertilization या fusion you can get the original 46 number of chromosomes. It initiates cleavage of zygote. अभी जैसे ही fertilization होगा, okay, sperm की entry के बाद जो ओवम होता है ना, उसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, वो एकदम मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाएगा, एंड देन इट विल इनिशिएट द क्लीवेज ऑफ जाइगोट. ये क्लीवेज एक स्पेशल टाइप का माइटोटिक डिवीजन जैसा ही है. वी विल डिस्कस इट लेटर. ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं, बट ये नाम समझ लो. क्लीवेज का मतलब होना कि वो क्लीवेज फरो, अगर आपको याद हो. ओके, सेपरेशन, एक का दो हिस्सों में बंटना, दैट इज नोन एज क्लीवेज. Fertilization also results in determination of sex in the embryo. तभी female जो भी है, in humans, the female have two sex chromosomes, that is X and X. The men have two sex chromosomes, which is X and Y. ठीक है? तो from female you can have only same type of egg cells which are containing the X chromosomes only. ठीक है ना? तो female की तरफ से you can only have one type of gamete which is having X type of chromosomes. Again, from men you can have two type of sperms. You can have either a sperm which has X chromosome or a sperm which has Y chromosome. ठीक है? Now by fusion of all of these different types you can get 4 possibilities. 4 possibilities होती है. The offspring might be a girl or a boy.
तो ये 50-50% चांस रहता है. ओके, सो एक्स अगर हुआ ऑफस्प्रिंग का ये क्या बोलते हैं फ्यूजन के बाद. ओके, एक्स देन इट मीन्स द fetus or the embryo will be a female. अगर XY हो गया then the fetus or the embryo will be male. तो इस हिसाब से उसका sex determination जो है that is also decided after fertilization. It combines the characters of two parents. अभी fertilization हुआ तो ये sexual reproduction है, right? So because of sexual reproduction, it combines the characters of the two parents. तो इस हिसाब से variations जो है they are also introduced in the species. So this is why the fertilization process is important. तो हमने देख लिया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या क्या जरूरी है, क्या क्या इवेंट्स होती है. वी सॉ फर्टिलाइजेशन एंड व्हाई फर्टिलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट. ये बाकी का जो भी है दिस यू माइट हैव स्टडीड इन जेनेटिक्स, सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इट इन डिटेल हियर. लेकिन दिस आई वांटेड टू मेंशन कि फीमेल यू कैन हैव एक्स एंड एक्स type of gametes, while the male there is difference. Okay, you can have 50% of the sperm which are X chromosome and 50% of the sperm which will have Y chromosome. तो इस हिसाब से sex determination जो है that is dependent on the men. अगर Y chromosome enter करता है then the child will be male, and if the X chromosome enters then the child will be female. So it is the men who are deciding factor. Okay. Now talking about post fertilization events. Fertilization हो गया, zygote बन गया, उसके बाद क्या? So here you can divide it in three main steps. You have cleavage, implantation and pregnancy. So let us start with cleavage. Cleavage is a series of rapid mitotic divisions. मैंने आपको बताया था cleavage एक mitosis का ही type है, which converts a single-celled zygote into multicellular blastula या blastocyst. Blastula, blastocyst दोनों एक ही चीज का नाम है, ठीक है? You can either call it blastula or you can call it blastocyst. तो हमने शुरुआत की थी इधर. Here you can see that you have the zygote. Okay, the zygote it will divide, जो आपको इधर metaphase state में दिखा रहा है, and after its division you can see two cells are formed. ठीक है, तो from one cell stage it can go to two cell stage and then further on वैसे बढ़ता ही जाएगा cell का number. Now why is this cleavage different from your normal mitosis? तो normal mitosis में क्या होता है? You have a cell, एक cell से शुरुआत करते हो, उसके इंटरफेस के दौरान ड्यूरिंग द इंटरफेस इट ग्रोज इन साइज, है ना? ग्रोथ फेज जी फेज जो है गैप 1 गैप 2 में इट इज ग्रोइंग, स्पेशली इन G1. तो उसका ग्रोथ हो जाए देन इट गोज इनटू एस फेज, सिंथेसिस फेज, जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट होगा. देन गैप 2 फेज जहाँ पे प्रोटीन्स और बहुत सारी चीजें बनती है. फाइनल फेज है बिफोर इट कैन गो फॉर माइटोसिस. तो ये बड़ा होके सेल जो है देन इट विल गेट डिवाइडेड इनटू टू सेल्स. ठीक है, तो ये छोटे सेल को जब डिसाइड हुआ कि वो सेल डिवीजन करेगा, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इट टू इंक्रीज इन साइज, है ना? वो इंटरफेस के दौरान बढ़ता है साइज में और फिर ही उसका डिवीजन पॉसिबल है. हियर इन क्लीवेज ओवम जो है, आई हैड टोल्ड यू कि इट इज द लार्जेस्ट सेल. तो ओवम इज ऑलरेडी अ वेरी लार्ज सेल, वो सबसे बड़ा ऐसा सेल है. इन क्लीवेज देर इज इन ड्यूरिंग इंटरफेज ऐसा कोई ग्रोथ नहीं होता, है ना? क्लीवेज हुआ तो ये जो भी ओरिजिनल साइज थी उसकी हाफ हो जाएगी. फाइन. सो हियर द सेल इज नॉट ग्रोइंग इन साइज बिफोर इट कैन अंडरगो सेल डिविजन, इसीलिए क्लीवेज अलग है. ओके, सो दिस इज वाई क्लीवेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस. तो ये ओवम में से यू गेट टू सेल स्टेज. ओके, एक और दो, ऐसे दो सेल बन गए. नाउ लेट अस से द नेक्स्ट स्टेज, तो उसमें भी उसका साइज कोई इंक्रीज नहीं होगा. ये दो सेल थे, दो में से चार बनेंगे ऐसे. तो ऑल ऑफ दीज फोर सेल्स दे विल बी अ लिटिल स्मॉलर इन साइज. ठीक है ना? ये जो भी ओरिजिनल सेल है उसकी साइज मेंटेन होगी, तो सेल्स आर नॉट ग्रोइंग इन साइज, इसलिए इसको क्लीवेज बोलते हैं. फाइन. राइट, सो the fertilization it has taken place in the ampulla, और उसके बाद जाइगोट जो है वो डिवाइड होते 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 एक मल्टी सेल्यूलर ब्लास्टुला बनाएगा. आफ्टर 30 hours
आफ्टर फर्टिलाइजेशन अबाउट अराउंड 30 आवर्स, ठीक है ना, 30 घंटे के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके 30 घंटे के बाद द जाइगोट डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स, उसमें एक में से 2 सेल बन जाएंगे. दिस हियर इज द जाइगोट. लेट अस से देयर हैज बीन 30 आवर्स पास्ड फ्रॉम दिस स्टेज. तो उसके 30 घंटे बाद देयर इज फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन एंड यू गेट 2 cells. Okay, the cells are known as blastomeres. Okay, blastomeres. These blastomeres are present in the upper part of the fallopian tube. The second division occurs within 40 hours of fertilization. अभी इसके बाद 40 hours of fertilization के बाद you get the second division. The second division में 2 में से 4 सेल बनेंगे. Now during these early cleavages, ये जो शुरुआत के cleavages है, the young embryo is slowly moving towards the from fallopian tube towards the uterus, है ना. तो इधर फर्टिलाइजेशन हुआ था, धीरे 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 करके इट इज मूविंग, वो डिवाइड भी हो रहा है और डिवीजन के साथ साथ इट इज मूव्ड टुवर्ड्स द यूटेरस. वो अपने हिसाब से नहीं मूव हो सकता. ऑफ कोर्स यू हैव द सीलिएटेड एपिथेलियम इन द ओविडक्ट. ये मैंने आपको बताया था कि पूरा फेलोपियन ट्यूब जो है इट हैज सीलिएटेड एपिथेलियम. तो वो सीलिया जो है वो इसको पुश कर करके धीरे 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 ऐसे रोल करते हुए द एम्ब्रियो विल बी फॉलिंग टुवर्ड्स द यूटेरस. ठीक है. तो फ्रॉम 1 cell it has gone to 2 cell stage. From 2 cell stage it will go to 4 cell, and from 4 cell 8 cell, and 8 cell 16. तो ऐसे ही बढ़ते जाएगा नंबर. Clear? And yeah, so it is moving from the fallopian tube towards the uterus. जैसे ही उसका division होता रहता है उस हिसाब से. At the end of 4th day the embryo reaches uterus. चौथे दिन के बाद the embryo जो है वो uterus तक पहुंचता है. This embryo it has 8 to 16 blastomeres. तो ये शायद 8 cell stage पे हो सकता है, मतलब बीच में कहीं पे, और it can be 16 cell stage जब ये पहुंचेगा. Okay, so this 8 cell stage 8 or 16 cell stage it is known as morula. तो morula जो है it is a solid mass of cells. morula जो है ये नाम आता है मलबेरी से. मलबेरी को हम हिंदी और गुजराती में बोलते हैं सेतूर. अभी सेतूर देखा है आपने? इट इज लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, है ना, छोटा सा एक आपने कहाँ पे पढ़ा होगा, इनफ्लोरेसेंस जब पढ़ते हो तभी आता है ये, राइट. सो सेम वे हियर आल्सो इट लुक्स लाइक अ ग्रुप ऑफ सेल्स. ओके, जैसे ग्रेप्स का बंच होता है वैसे ही दिखता है. सो दिस सॉलिड मास ऑफ सेल्स इज नोन एज मोरुला. तो 8 से 16 सेल तक हो जाता है तब तक. Okay, so here you can see this is your textbook diagram again, which is showing you the ovum, fertilization, 2 cell stage, then 4 cell stage, and finally morula. So morula जो है it looks like a bunch of grapes. When the blastomeres divide completely, the cleavage is known as holoblastic. Holo में से आप याद रखो whole, ठीक है ना, WHOLE, whole, पूरा. तो पूरा cleavage होता है इसलिए इसको बोलते हैं holoblastic cleavage. ठीक है. So we have reached till this stage, E stage, जहाँ पे morula बन गया है. अभी morula के बाद it will reach the uterus in this F stage. Okay, F stage here is the 16 cell stage. E वाला 8 cells है. Here you can count there are 8 cells. Okay, so the 8 cell stage you will get next is the 16 cell stage, और ये 16 cell stage जो है it will reach the uterus as shown here. At the next 64 celled stage, अभी जब 64 cells हो जाएंगे total, a cavity is formed within the cell mass. अभी जैसे ही वो यूटेरस में एंटर करेगा ना, और उसके बाद उसमें डिवीजन होगा एंड देयर आर 16 cells. तो ये आपका नॉर्मल मोरुला है which is like a bunch of grapes. लेकिन इस मोरुला के अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा. ओके, देयर इज सम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ऑल फ्लूइड्स, जिसकी वजह से देयर इज अ कैविटी क्रिएटेड, बीच में ऐसे खाली जगह बन जाती है. ओके, सो दिस एम्प्टी कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोसील और ब्लास्टोसिस्ट कैविटी. ठीक है, ये जो कैविटी बन रही है आफ्टर द मोरुला स्टेज अराउंड 64 सेल स्टेज, दिस कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोसील और या फिर ब्लास्टोसिस्ट कैविटी. एंड द एम्ब्रियो, अभी ये जो 64 सेल स्टेज वाला एम्ब्रियो जो है उसको बोलेंगे ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट. ठीक है, फ्रॉम मोरुला टू ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट. इसमें सारे सेल्स जो है
दे आर अरेंज्ड इन दिस बाउंड्री, और बीच में खाली जगह है, क्लियर, हॉलो बॉल की तरह. नाउ देर इज एन आउटर लेयर ऑफ सेल्स, ये जो बाहर आपको सेल्स दिख रहे हैं इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट. यू लुक एट दिस बॉटम डायग्राम, यू कैन सी द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट. ठीक है, दिस ट्रॉपिक लेयर्स और ऐसा सब आपने जहाँ पे भी ट्रॉपिक ट्रॉपिक पढ़ा हो, ऑटोट्रॉप, हिटेरोट्रॉप, है ना, तो ये ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन. तो ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर का काम क्या है, न्यूट्रिशन इकट्ठा करना फॉर द एम्ब्रियो. ठीक है, तो हियर यू हैव द ट्रोफोब्लास्ट एंड इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो. अभी ये खाली जगह जो है विच इज ब्लास्टोसील विच इज फिल्ड अप विथ फ्लूइड, उसमें आपको एक जगह पे इकट्ठा सेल्स दिखेंगे. ओके, यू हैव द आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट एंड इनसाइड यू हैव दिस फ्लूइड, एंड ऑन वन एंड, कोई भी एक एंड पे थोड़े सेल मास दिखेगा आपको. ओके, सम सेल्स दे आर गैदर्ड देयर एंड फॉर्मिंग अ माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर, है ना, छोटा सा ऐसा ढेर बना दिया है. सो दिस इज नोन एज इनर सेल मास, अंदर की तरफ है इसलिए इनर, और पूरा मास है सेल का, है ना, तो इसलिए इसको बोलेंगे इनर सेल मास. दिस इनर सेल मास इज ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियोब्लास्ट. ठीक है, बाहर का लेयर ट्रोफोब्लास्ट और ये अंदर का जो लेयर है दैट इज नोन एज एम्ब्रियोब्लास्ट. नाम पे से ही आपको पता लगता है कि ट्रोफोब्लास्ट, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज फॉर न्यूट्रिशन ऑफ द एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियोब्लास्ट जो है उसमें से बच्चा बनेगा. ठीक है, दिस इज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ दैट चाइल्ड, एंड दिस एम्ब्रियोब्लास्ट इज द वन विच विल फॉर्म द प्रॉपर एम्ब्रियो और फीटस. अगर आपकी टेक्स्ट बुक में FOETUS लिखा है तो दैट इज जस्ट अ ब्रिटिश स्पेलिंग ऑफ फीटस, ये भी चलता है. ओके, FETUS इज अमेरिकन इंग्लिश, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, इट इज वन एंड द सेम. ना ट्रोफोब्लास्ट, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये आगे जाके क्या करेगा, इट विल स्टिल डिवाइड, उसमें भी डिविजन होगा, एंड इट विल फॉर्म द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स. मतलब आपने अगर बच्चे को देखा हो तो इन द वूम्ब, ओके, दे आर कवर्ड विद डिफरेंट मेम्ब्रेन्स, उसके आसपास बहुत अलग अलग मेम्ब्रेन्स होते हैं. सो द मेम्ब्रेन इज नोन एज कॉरियन मेम्ब्रेन, एमनियन मेम्ब्रेन. ठीक है ना, तो ये सारी मेम्ब्रेन्स जो है वो ट्रोफोब्लास्ट बनाएगा. And the third important part of trophoblast is it forms a part of placenta. Placenta हम देखेंगे, it is a mixed structure, मतलब थोड़ा part जो है it is from the child and the rest of the part is from the mother. तो ये जो child की तरफ से जो part आता है, okay, for absorption of nutrition in placenta, तो वो trophoblast में से बनता है. नाउ टॉकिंग अबाउट इम्प्लांटेशन, अभी तक हमने जो भी बात की, ये ब्लास्टुला जो भी बन गया, इट इज स्टिल फ्लोटिंग, है ना, उसको अब भी पुश करके ऐसे फ्लोट ही कर रहा है. अभी यूटरस में पहुंचने के बाद इट विल गेट अटैच्ड, वो एक जगह पे अटैच हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा. दैट पोर्शन इज नोन एज इम्प्लांटेशन, वो कहीं पे प्लांट हो जाएगा. ठीक है ना, फिक्स हो जाना. So implantation is attachment of the blastocyst to uterine wall after 7 days of fertilization. तो fertilization होने के 7 दिन बाद ये embryo जो है या blastocyst जो है, it can come and attach to the uterus. Now here I wanted to discuss the zona pellucida. हमने देखा था ना zona pellucida which is made up of glycoprotein. तो इसका फंक्शन क्या था, तो जब तक वो यूटरस तक नहीं पहुंच जाता, okay, till this embryo does not reach uterus, it should not get attached anywhere else, उसका कहीं और पे attachment नहीं होना चाहिए. तो it prevents the implantation of blastocyst at abnormal site, कोई भी अजीबोगरीब साइट पे ना हो जाए इसलिए. as blastocyst is formed, एक बार blastocyst बन गया, उसके बाद the zona pellucida becomes thinner and finally disappears. तो अभी उसका काम नहीं रहता है, तो it becomes thin and it finally disappears. तो zona pellucida जो है, it is important here कि ये जो भी cells है, okay, they should not get attached anywhere else. उसका fallopian tube में attach नहीं होना चाहिए, यूटरस के ऊपर के भाग में attach नहीं होना चाहिए, इसको साइड वॉल यूटरस का जो होता है उस पे ही अटैच होना है. तो that only can happen when it reaches the blastula stage. So only after blastula or blastocyst stage the zona pellucida will be disintegrating. About 8 days after fertilization, the trophoblast develops into 2 layers. अब ये देखो, implantation हो गया. Implantation कहाँ पे होगा, uterine wall पे. Uterine wall में सबसे अंदर का लेयर कौन सा है, endometrium.
राइट. सो हियर यू कैन सी दिस इज द एंडोमेट्रियम. ये एंडोमेट्रियम है. ओके. और एंडोमेट्रियम के अंदर पूरा का पूरा घुस जाएगा. तो आप देख सकते हो बाहर भी ऐसा एंडोमेट्रियम एपिथेलियम है. एंड दिस हैज कम इनसाइड नाउ. पूरा अंदर घुस गया है. राइट. सो हियर द ट्रोफोब्लास्ट जो सबसे बाहर वाला लेयर था ब्लास्टोसिस्ट में, इट डिवाइड्स इनटू 2 लेयर्स. वो 2 लेयर बनाएगा. एक को बोलते हैं सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट जो ये बाहर आपको ब्राउन कलर का दिखाया. एंड द सेकंड वन इज नोन एज साइटोट्रोफोब्लास्ट जो आपको ये पिंक कलर में दिखाया. ओके. सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, सिंसिशियो जहां पे भी नाम आए इसका मतलब होता है फ्यूज्ड, है ना. तो इधर भी आप देख सकते हो कि यू कैन नॉट मेक आउट एनी इंडिविजुअल सेल. इसमें आप इंडिविजुअल सेल नहीं पहचान सकते. क्यों? क्योंकि इट इज मोस्टली जस्ट साइटोप्लाज्म. ये पूरा सेल मेम्ब्रेन होगा और उसके अंदर साइटोप्लाज्म है एंड ऑल दीज डॉट्स आर एक्चुअली न्यूक्लियाई. ठीक है. तो इसलिए ये रीजन जो है इसको बोलेंगे सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट. और बाकी का जो है साइटोट्रोफोब्लास्ट दैट यू कैन एक्चुअली सी इन फॉर्म ऑफ सेल्स. तो वो नॉर्मल सेल्स का एक सराउंडिंग लेयर बनेगा. ठीक है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट. ट्रोफोब्लास्ट में से 2 पार्ट बन गए, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट. अब ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट का काम क्या है? इट विल रिलीज सर्टेन एंजाइम्स. ओके. ये एंजाइम रिलीज करेगा. उसी हिसाब से ये थोड़ा थोड़ा एंडोमेट्रियम खाता जाएगा. जैसे एंडोमेट्रियम खाता जाएगा वैसे ही ये एम्ब्रियो जो है पूरा वो थोड़ा अंदर घुस सकेगा. ठीक है. तो इसलिए सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट का काम है to eat a little bit of endometrium and make space for the embryo. The blastocyst sinks completely into a pit formed in the endometrium. ठीक है ना. ये पिट का मतलब होता है गड्ढा बनाना. तो ये जो भी गड्ढा बन गया उसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट पूरा का पूरा फिक्स हो जाएगा. गड्ढा कौन बना रहा है? योर सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट. The cells of inner cell mass. अभी आप ब्लास्टुला में देख लो. We had studied this inner cell mass जिसको हम embryoblast बोल रहे थे. तो ये inner cell mass जो है that divides in 2 layers. अभी उसमें भी layers बढ़ रहे हैं. You have a whole hypoblast layer which is a layer of small cells, okay, small cuboidal cells. And then you have an epiblast layer which is a layer of columnar cells. ठीक है. तो आप इधर देख सकते हो there is a layer of hypoblast जो small cuboidal cells है. hypo का मतलब होता है नीचे. तो ये आपको येलो कलर वाले सेल्स दिख रहे हैं नीचे. एंड देन ऊपर वाले जो है दे आर अ लिटिल टॉलर. सो दे आर नोन एज एपीब्लास्ट लेयर और लेयर ऑफ कॉलमनार सेल्स. तो इस हिसाब से पूरा बाई लेयर्ड एम्ब्रियोनिक डिस्क बनता है. ओके. सो बोथ हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट दे फॉर्म अ फ्लैट डिस्क लाइक शेप. तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज अ डिस्क. और ये डिस्क जो है इसको बोलेंगे एम्ब्रियोनिक डिस्क. अभी जो भी बेबी का बॉडी बनना है वो यही एम्ब्रियोनिक डिस्क में से बनेगा. ये ओके. नाउ प्लासेंटा. अभी हम प्लासेंटा की बात करेंगे. सो आफ्टर इम्प्लांटेशन finger like projections appear on the trophoblast which are known as chorionic villi. अभी ये जो आप देख रहे थे सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट कब तक खाता जाएगा अंदर? जब तक कि ये मेटर्नल ब्लड वेसल्स है. ओके. दीज आर द ब्लड वेसल्स, एंडोमेट्रियल ब्लड वेसल. तो ब्लड वेसल तक पहुंच नहीं जाते तब तक ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट खाता जाएगा. ठीक है. जैसे ही ब्लड वेसल तक पहुंच गए उसके बाद यू कैन सी इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. ऐसा फिंगर जैसा बनाने लगेंगे द ट्रोफोब्लास्ट, द साइटोट्रोफोब्लास्ट. ओके. तो ये जो अंदर का पिंक लेयर है विच आर द साइटोट्रोफोब्लास्ट और ये बाहर का ब्राउन है सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट. तो ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट जैसे ही ब्लड वेसल तक पहुंचा उसके बाद साइटोट्रोफोब्लास्ट विल फॉर्म फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको ये थर्ड डायग्राम में दिख रहा है ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स. These are known as chorionic villi, plural chorionic villas in singular. ठीक है. तो ऐसा finger like projections बनाएंगे और ये finger like projections जो है they will be absorbing the nutrition from mother's blood. तो ये जो भी mother का blood है उसमें से सब absorb करके embryo तक पहुंचाने का काम cytotrophoblast करेगा. So these are the chorionic villi which are surrounded by uterine tissue and maternal blood. अभी if you look at this is a baby. okay. ये baby है और baby जिस sac के अंदर है जो आपको ये clear transparent polythene जैसा structure लग रहा है उसको बोलते हैं amnion. ठीक है. या amnion amniotic sac.
तो ये सैक जैसा है, थैले जैसा है, इसलिए इसको बोलेंगे एमनियोटिक सैक। तो एमनियोटिक सैक बनाना भी ट्रोफोब्लास्ट का काम है। इसके अंदर होगा एमनियोटिक फ्लूइड एंड आउटसाइड यू कैन सी दिस कैविटी, एक कैविटी बनती है ना? तो वो कैविटी भी ट्रोफोब्लास्ट से ही बनेगी। फाइन, सो दिस इज व्हाई वी वर सेइंग कि ट्रोफोब्लास्ट से ऐसे लेयर्स जो बनते हैं ना, दैट विल बी सिंथेसाइज्ड बाय द ट्रोफोब्लास्ट। चलो, अगर ये पार्ट जो है अभी जहाँ पे आपका एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ था, ओके, दिस हियर इज द एंडोमेट्रियम, तो जहाँ पे एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ था उस जगह पे यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ओनली हियर यू कैन फाइंड दैट। तो उसको जूम करके देखो, तो हियर यू कैन सी द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको बोलेंगे हम कोरियोनिक विलाई। जैसे ही एम्ब्रियो बड़ा होता जाता है, ये कोरियोनिक विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स बनती है। ठीक है, तो इसके अंदर आप रेड और ब्लू जो देख रहे हैं, दे आर द आर्टरीज एंड द वेन्स। ठीक है ना, ब्लड वेसल्स है। नाउ दिस कोरियोनिक विलाई आउटसाइड व्हाट यू कैन सी, बाहर की तरफ जो आपको ब्लू और रेड दिख रहा है, दैट इज एक्चुअली द मेटर्नल ब्लड वेसल्स। ओके, तो ये एंडोमेट्रियल जो ब्लड वेसल्स है, ओके, विच आर कमिंग फ्रॉम द मदर, दे आर प्रेजेंट हियर। और ये पूरे स्ट्रक्चर को, जहाँ पे थोड़ा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, मतलब आपके बेबी का स्ट्रक्चर है, उसकी ब्लड वेसल्स है, और द रेस्ट ऑफ द पोर्शन हैज द ब्लड वेसल्स ऑफ द मदर। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसको बोलेंगे प्लासेंटा। द कोरियोनिक विलाई, तो ये हो गए कोरियोनिक विलाई। देन द यूटेराइन टिश्यू, ये सारे यूटेराइन टिश्यू है, राइट। बिकम इंटरडिजिटेटेड। इंटरडिजिटेटेड मैंने जैसे आपको नहीं, आपको नहीं बताया, ठीक है। इंटरडिजिटेशन मतलब जैसे आप एक हाथ की फिंगर्स दूसरे हाथ के फिंगर्स के बीच में डाल सकते हो ना, तो उसको इंटरडिजिटेट करना बोलते हैं। ओके, डिजिट्स मींस फिंगर्स। तो एक हाथ की फिंगर्स दूसरे हाथों के फिंगर्स के बीच में आके फिक्स हो जाती है, वैसे ही इंटरडिजिटेशन होता है बिटवीन द कोरियोनिक विलाई एंड द यूटेराइन टिश्यू। तो ये पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्लासेंटा। ठीक है, यू कैन इवन सी इट इन दिस बॉटम डायग्राम विच इज शोइंग यू द सेम। ये मेन fetal vein है, okay, which is shown in blue color, and this red colored one is the fetal artery। ठीक है ना, और वो fetal artery में से फिर डिवाइड होके कैपिलरीज और स्मॉल वेन्स और ये सब बन रहा है। Now these capillaries and veins, they are not in direct contact with the maternal blood। ठीक है, ये maternal artery है, maternal vein है, तो उसके साथ directly contact में नहीं है। क्या होगा, ये maternal arteries जो है ना, they will be forming these swimming pools। ऐसा समझ लो ये swimming pool है, तो इसको lacuna बोलते हैं, but this square structure is actually a swimming pool of blood। तो वो ब्लड ऐसे ही स्विम कर रहा है, और उसमें जो भी न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, दैट विल बी टेकन अप बाय दिस एम्ब्रियोनिक वेन्स एंड आर्टरीज, और उसके बाद इट विल एंटर द बेबी। ठीक है, तो कहीं पे भी दोनों ब्लड वेसल्स जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, दे आर इन कांटेक्ट थ्रू दिस स्विमिंग पूल। ये पूल जो है उसमें से जब भी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा, तो दैट इज कैरिड अवे बाय द वेन। The placenta facilitates the supply of oxygen and nutrients to the embryo। वो प्लेसेंटा की वजह से ही एम्ब्रियो तक जो भी ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है, वो पहुंचता है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटीरियल। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटीरियल होगा बेबी का, दैट इज ऑल्सो exchanged here through placenta। The placenta is connected to the embryo through an umbilical cord। अभी ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना कनेक्टिव टिश्यू वाला, उसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं ये। ओके, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर यू विल फाइंड द वेन्स एंड द आर्टरीज। ठीक है ना, द फीटल वेन और फीटल आर्टरी जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होती है। सो थ्रू दिस अम्बिलिकल कॉर्ड द बेबी और द फीटस इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। ओके, now talking about one hormone which is known as human chorionic gonadotropin, yeah, HCG। Okay, human is written in small h and CG is chorionic gonadotropin। तो ये chorionic villi तो आपको समझ में आ गया होगा। Okay, so from that name only comes chorionic gonadotropin। ये trophoblastic cells जो है which are making the placenta, okay, this secrete HCG hormone। अभी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, so remember this only, trophoblastic cells secrete HCG या placenta secretes HCG। okay,
Your textbook says that placenta secretes HCG. So just remember that much. अगर आपको प्लेसेंटा में भी स्पेसिफिकली जानना है तो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स ओनली दे secrete HCG. HCG का फंक्शन क्या है? तो इट इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ LH. LH का फंक्शन हमने कल पढ़ा था ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, तो वो कॉर्पस लूटियम जो है उसको मेंटेन करके रखेगा, है ना? अगर कॉर्पस लूटियम मेंटेन हुआ तो वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता रहेगा। और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? तो प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स एंडोमेट्रियम। तो इस हिसाब से एंडोमेट्रियम का मेंटेन होना तो जरूरी है, वरना तो आपका एम्ब्रियो निकल जाएगा मेंस्ट्रुएशन में, राइट? सो टू मेंटेन दिस एंडोमेट्रियम, HCG वो जाके कॉर्पस लूटियम को बोलेगा कि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करते रहो। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता रहेगा तो एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगा, and this causes the baby or the embryo to grow, and it is maintained. Okay, endometrium is growing and is maintained throughout the pregnancy. Progesterone prevents menstruation, plus it causes the secretion of mucus. ये progesterone क्या करेगा? ये menstruation को नहीं होने देगा, and it will also cause secretion of some thick mucus. तो ये thick mucus का काम क्या है? It will block this cervix, है ना? बेबी तक कुछ भी पहुंच ना पाए, इसलिए it will form a protective plug during pregnancy. एकदम thick mucus से पूरा cervix जो है उसको भर देगा, and this is how the baby is protected. ठीक है? Now this HCG, it can be measured in the women's urine. Okay, जो भी pregnant होंगे उसके यूरिन के अंदर यू कैन फाइंड HCG. तो जो भी आपने शायद एडवर्टाइजमेंट में देखा हो या कहीं पे पढ़ा हो कि वेदर यू आर प्रेग्नेंट और नॉट, बस 5 मिनट में पता लगेगा, ये वो उसके ऊपर सिर्फ यूरिनेट करना है, देन यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट वेदर यू आर प्रेग्नेंट और नॉट. वो लाइंस आती है, राइट? सो व्हाट इज दैट किट मेथड या जो भी प्रेगा श्योर, प्रेगा न्यूज, ये वो जो भी है, what are they actually measuring? They are measuring the HCG level in the urine. अगर प्रेग्नेंट है तो HCG होगा, तो you will be able to find it on the pregnancy test. अगर HCG नहीं है then the woman is not pregnant, तो आपको वो टेस्ट नेगेटिव आएगा. So this is how HCG is actually used for finding out whether the woman is pregnant or not. Now, apart from this HCG, the placenta also produces human placental lactogen. Lactogen नाम पे से आपको पता लगता है कि it is related with the growth and development of mammary glands. Okay, it is getting ready for the milk production. Then estrogens, progestogens, etc. Progestogens मतलब they are steroidal hormones which are similar to progesterone. ठीक है, उसका काम is similar to progesterone. So the group of such hormones is called progestogens. तो ऐसे कई सारे hormones जो है they are secreted by the placenta. In the later phase of pregnancy, relaxin is also secreted by ovary. Relaxin नाम पे से आपको पता लगता है कि it will relax, है ना? जो भी smooth muscles है उसको relax करेगा so that the baby can fit inside the mother's uterus. During pregnancy, the levels of other hormones also increase, like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine. ये सारे जो भी hormones है उसके level भी बढ़ जाते हैं. I have highlighted all of them in red because they are important. ठीक है ना? ये नाम याद रख लेना. So what do these do? They increase several fold in the maternal blood and they are essential for the fetal growth. ठीक है, वो fetal growth या उसके development के लिए important होते हैं. So which is why they are secreted. Okay, and they will also help the mother कि ये सारे जब hormone levels बढ़ जाएंगे तो the mother is also ready for maintaining the pregnancy. तो इसलिए ये hormones जो है they are higher in pregnancy. Now talking about the embryonic development, moving ahead. You have gastrulation. Gastrulation मतलब अब तक हमने जो भी पढ़ा, did you remember we saw कि दो layers बनते हैं, okay? Embryonic disc जिसको हमने बोला था कि नीचे की तरफ small cuboidal cells, ऊपर की तरफ long columnar cells, right? So after implantation, अभी implantation हो जाए तब तक सिर्फ embryonic disc ही रहेगी. आफ्टर इम्प्लांटेशन एक बार ब्लड सप्लाई अच्छे से सेटअप हो जाता है, उसके बाद द एम्ब्रियोब्लास्ट डेवलप्स इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म,
and inner layer known as endoderm. अभी इसका नाम चेंज हो जाएगा ectoderm and endoderm. थोड़ा टाइम हो जाए उसके बाद there is another layer formed in between which is known as mesoderm. ठीक है, तो अभी 3 लेयर बन गए, ectoderm outer layer, mesoderm middle layer and endoderm inner most layer. ठीक है, तो ये एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म में से अलग अलग जो भी पार्ट्स है वो सिंथेसाइज होंगे. फॉर एग्जांपल फ्रॉम द एक्टोडर्म विच इज प्रोड्यूस नियर द एनिमल पोल. मैंने आपको बताया था इन द लास्ट क्लास कि एनिमल पोल वेजिटल पोल वाई आर द इम्पोर्टेंट. तो उस हिसाब से डिसाइड होता है ओके कि किस जगह पे से कौन सा पार्ट बनेगा बेबी का, इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट टू नो. सो नियर द एनिमल पोल एक्टोडर्म होगा, तो एक्टोडर्म जो है इट प्रोड्यूसेस द स्किन. जो भी एपिडर्मल लेयर्स है या एपिडर्मल टिश्यू है इट इज ऑलवेज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. वो ये एक्टोडर्म वाले सेल्स ही बनाएंगे. तो ये डिफरेंशिएट हो रहे हैं धीरे धीरे करके सेल्स, है ना. फिर ये एक्टोडर्म जो है इसमें बीच में से थोड़ा ऐसा डिप होगा. Okay, these are just two layers now. After a little bit of growth they will start moving inwards. ऐसा थोड़ा बन जाएगा. तो ये जो बना है ना बीच में सर्कल जैसा, that will be the one which will form the nervous system. ठीक है, इसमें से न्यूरल एक्टोडर्म या मिडल लाइन ऐसे बनेगी and this will synthesize your nervous system. इसलिए nervous system is also ectodermal in origin. ठीक है. Now talking about this part, ये जो आपको पिंक कलर में दिख रहा है दैट इज द मीजोडर्म. मीजोडर्म फॉर्म्स मसल्स. ये नाम याद रख लेना, मसल बनता है, मतलब मोस्टली कनेक्टिव टिश्यू जितने भी है ना दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द मीजोडर्म. ठीक है, तो मसल हो गया, बोन हो गया, किडनीज, ब्लड, गोनाड्स, कनेक्टिव टिश्यूज, अदर कनेक्टिव टिश्यूज. ओके, ऑल ऑफ दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम मीजोडर्म. और फिर सबसे अंदर का जो लेयर होगा विच इज नोन एज एंडोडर्म. एंडोडर्म्स फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ गट. जो भी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है ना, आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का अंदर का जो भी पोर्शन है, इनर लाइनिंग है, दैट इज मेड बाय एंडोडर्म. देन लिवर इज मेड फ्रॉम एंडोडर्म, लंग्स आर मेड फ्रॉम एंडोडर्म. तो जो इनर कुछ कुछ ऑर्गन्स है और टिश्यूज है दे आर एंडोडर्मल इन ओरिजिन. These layers give rise to all tissues in adults. And the inner cell mass, जो भी हमने blastocyst में देखा था, the inner cell mass, these cells are called stem cells. ठीक है, stem cell का मतलब होता है the cells which can divide and differentiate in any type of cell. वो कोई भी सेल उसको जो भी मन में आए वो बना सकता है. It can form a neuron, it can also form your heart cell, it can form a cell of the skin. तो ऐसे सेल जो डिवाइड होके कुछ भी बना सकते हैं उसको बोलते हैं स्टेम सेल. और ये कैपेसिटी को बोलते हैं टोटी पोटेंसी. ठीक है, पोटेंसी या पोटेंट होना मतलब केपेबल होना. टोटी पोटेंट मतलब कुछ भी, टोटली पोटेंट, कुछ भी बना सकता है. ठीक है, तो द स्टेम सेल्स आर टोटी पोटेंट and they have potency to give rise to all tissues and all organs. इसलिए कभी आपने सुना होगा शायद कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो होते हैं उसको स्टोर करके रखते हैं कई लोग. Okay, nowadays they store some certain embryonic stem cell which can be still found in the placenta. और ये स्टोर करके रखते हैं so that in future if there is any requirement ये stem cell में से बेबी का कुछ भी बनाना हो तो you can easily make. Okay, fine. So I think we will end the lecture here. We will talk about pregnancy and all in the next class. I thought I might be able to cover it, but शायद बहुत लंबा हो जाएगा lecture. So we will just end this lecture here. And then in the next class, we will discuss the pregnancy as well as the development of the fetus and childbirth as well as lactation. So see you next time.